So okay, so the recording has started. So you can see this environment here. Okay, so I'll just start by writing a small piece of code where we'll see that how, and let me just add a few things here. Um, okay, right. So here is an example, and this would be just a refresher for some of you. Okay, so what is this small piece of code doing? Well, I'll just have to add the main function, and then we can also write down this stuff. Okay, right. So what is this piece of code doing? I mean, we have declared a variable here, and we have assigned that variable. It's an integer type variable v1. We have assigned a value 17, and then in the second line, what we have done is that we have declared um, a reference variable, and that reference variable is ref1. And you can see that ampersand sign here, which is primarily the difference in declaring a standard variable versus a reference variable. And we have assigned this reference variable v1. So what's the difference between these two? Between these two lines? So practically, what would happen behind the scene? What would the first command do, and what would be the second command do? Okay, Ji. Yes, go ahead, Yazlan. सर द फर्स्ट लाइन वो मेमोरी में जो है ना एक क्या नाम है प्लेस लेगी मतलब कुछ 8 बिट्स लेगी लेट्स से ये सिंस दिस इज एन इंटीजर तो वो 16 बिट्स लेके आपकी एक वैल्यू स्टोर करेगी और जो आपकी सेकंड लाइन है वो उस मेमोरी का जो मेमोरी की जो लोकेशन है ना उसका जो मतलब जो पॉइंटर है उसकी तरफ वो जो है ना वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर. Acha, let me just make it clear. I'll not be using this word pointer anymore here, okay? Because that is something that we'll be discussing later on. Okay? Abhi, it's basically reference variable that we are talking about. Okay? We are not talking about the concept of the pointers. Okay? So what would the first line do? The first line would primarily, because v1 would have a memory allocated in the which is line number 18. So memory allocation will happen for v1, and at that memory location you'll have a value 17 stored. Okay, so that is what line number 18 will do. Acha, what would line number 19 do? Line number 19, because of this ampersand sign, ref1 is a reference variable now. Okay, and a reference variable would always refer, or would primarily store uh, or would refer to the memory location of the first variable, which is v1, because you have actually initialized it with v1. I think this would become more clear when we just run this
run a few cout commands here. So let's just see that what would be the result of these commands. Okay, so the first cout command that would print the value of v1. The second one, we have used an ampersand sign with v1. Whenever you are using an ampersand sign with any variable, that becomes a reference to the address. Okay, so now the address would actually be given to you, or will be displayed because of this ampersand sign. Then the third line here, if you look at the third line, we are displaying the contents of the reference variable ref1. Okay, so the contents of the reference variable will be displayed. And finally, which is the fourth line, we are retrieving the address of this reference variable. Okay, so what do you think will happen if I run this code? So what would be the first output, or the line number 21? What would be the output of that line number 22, 23, and 24? Okay, so line number 21 will display 17, okay, because that's the value. Line number 22, what will line number 22 do? Okay, so this would give you the address of v1. Line number 23, that would give you the value of the reference variable, okay, which is ref1. And the last line, which is line number 24, that would primarily give you the address of the reference variable. Okay, so let's just run this and see. So is there any issue with this code? Shall we run it? सर वो रिटर्न जीरो के बाद Okay, so let's just run this. Okay, and here you go. So you can see the output on the console. So this is example number 1. Value of v1 is 17. Address of v1 is given here. And then the value of reference variable ref1, and this reference variable is to variable v1. So the contents of reference variable would be displayed. And the last line actually gives you the address of the reference variable. Now, so you can, G Mubi. Sir, why is the address of the reference variable and the value address of v1 the same? Okay, so that's what actually I was going to ask you guys. Okay, do you see anything here? Okay, so one thing which we have identified is that the address of v1 and the address of the reference variable, they are the same. Okay, now why is that? So what is this reference variable doing? So what we have done, we have only declared a variable v1, and then what we have done is that we have declared another reference variable here, which is ref1. So this line number 19 with ampersand sign, okay, line number 17, 19 with ampersand sign, that is a reference variable to v1, a reference variable to v1. Okay, so what is this reference variable doing now? This should primarily be very interesting for you, and that is that this reference variable, whenever we are using this word reference variable, it would refer to the memory location of v1. Okay, so in order to retrieve the memory location that to which it is this reference variable is pointing, you will actually be using this ampersand sign. Okay, so whenever you will be using an ampersand sign,
this would give you the memory location. That's clear. Okay, so there is no doubt about that. लेकिन what's happening here is कि जो reference variable है, that reference variable is primarily pointing to the same contents that v1 has got, and that content is actually 17, and that 17 is placed at a particular memory allocation or a memory place. सो V1 की जो V1 जिस मेमोरी एड्रेस में कंटेंट्स को देख रहा है, उसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर रेफरेंस वेरिएबल भी देख रहा है. ओके, सो बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली रिफरिंग टू द सेम मेमोरी एड्रेस, एंड दिस इज द, और वो मेमोरी एड्रेस कौन सा है, वो एक्चुअली V1 का मेमोरी एड्रेस है. ठीक है, so this should be very very clear. So generally what happens is if I use let's say a variable with an assignment statement, let's say कि अगर मैं एक और variable define कर दूं v2, so let's just do that. अगर मैं एक और variable यहाँ पे define कर दूं let's say v2, and if I put it equal to v1, ठीक है, okay, and let me just run this. Okay, fine, compiles well. और अब अगर मैं if I just, I mean value की जगह, okay, I can here if I say कि जी इसके एड्रेस को v1 के एड्रेस को रिट्रीव करो और v2 के एड्रेस को रिट्रीव करो. Okay, and I'll just comment this out for a while. Okay, so what do you expect should be the outcome of this? Sir, the addresses would be different. Okay, now here you see that the addresses are different. And why these addresses are different? Because they are different variables. They are different variables, but line number 20 is actually assigning one variable to another. Because V2 is It's assigning the same value. The memory location is the same. Right, exactly. That's what's happening. So what's happening at line number 20? Line number 20 is actually copying the contents of V1, whatever the contents are. And here the content is number 17, integer 17. Okay, so it's copying that to another memory location. And that memory location is being referred to as a variable v2. So line number 20 is actually doing a copying operation. So this one is copying the contents. Okay, so I can write it down, so it's actually copying. Okay, right? So क्या हो रहा है? You have two separate memory allocations. V1 की एक memory allocation है, V2 की एक और memory allocation है. राइट. सो v1 का कंटेंट आपने जो उसके अंदर वैल्यू है, यू हैव एक्चुअली टेकन दैट वैल्यू, एंड लाइन नंबर 2 इज डूइंग व्हाट, और जो v2 का जो मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे v2 ने अपने मेमोरी एलोकेट की हुई है सिस्टम ने, 17 इज बीइंग कॉपीड टू दैट सेपरेट एड्रेस. ठीक है, दैट्स वाई यू हैव दीज टू सेपरेट एड्रेसेस हियर. लेकिन ऑन दी अदर साइड लाइन नंबर 19 में मैंने क्या किया है, लाइन नंबर 19 में मैंने ये किया है कि आई हैव एक्चुअली डिक्लेयर्ड अ रेफरेंस वेरिएबल. इट्स नॉट अ सिंपल कॉपिंग ऑपरेशन नाउ. अब कॉपी नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है कि यू हैव द सेम कंटेंट, और जिस मेमोरी लोकेशन के ऊपर v1 का कंटेंट पड़ा हुआ है, रेफरेंस वेरिएबल इज रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है, दैट्स वाई वी आर सेइंग, और वो उसकी कॉपी नहीं बना रहा. ठीक है, आपने लाइन नंबर 19 जनरेट्स अ न्यू वेरिएबल एंड वी कॉल इट अ रेफरेंस वेरिएबल. इट वुड रेफर टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ v1. it will not copy the contents of v1. so that means कि reference ref1 जो है, line number 19 will not generate or will not occupy a 17 at a separate memory allocation. ठीक है, वो सेम मेमोरी एलोकेशन जो कि पहले हुई है
उसी को ref1 रेफर करेगा. I hope this is clear. Is there any question? जी बासित. सर मुझे ये उसका एड्रेस जो रेफरेंस वन का वो क्यों सेम है V1 से, मतलब उसके वो अपने अंदर V1 का एड्रेस स्टोर कर रहा है. It's actually referring to G. It is actually referring to that content. So अगर इसको मैं diagrammatic form में represent करूँ, so there are two things here which should be very clear. Let me just okay. Let me just show you. Um, sorry, I'll just stop the screen sharing for a while. मैं whiteboard को share करता हूँ so that I can actually refer. Okay, so what's happening here? So here you have a memory allocation, और इस memory allocation को आपने एक variable v1 कह दिया, ठीक है, और इसके अंदर 17 पड़ा हुआ, ठीक है. So this is what is referring to. अगर मैं v2 declare करता हूँ separate, so you will have a separate memory allocation, और ये कंटेंट वहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, एंड दिस मेमोरी एलोकेशन का नाम जो है दैट इज़ v1. लेकिन इफ़ आई डिफाइन ref1 which is ref1, this will not generate a copy. In fact it would point to this memory allocation, ठीक है. सो ये दोनों ऑपरेशंस के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है, ठीक है जी. And this should be very clear. So reference variable जो है that is not generating a copy. So what so I hope this diagram would give you some idea. So this would have a memory location, ठीक है, और v1 का जो content है और ref1 का जो content है, both of them are placed at the same memory location, ठीक है. A copy is not being generated, whereas v2 अगर मैं अलग से declare करता हूँ, a copy is actually generated here, ठीक है. And that's why Sir, we call it a reference variable. We are not calling it a simple variable. It's a reference variable. It's actually referring to an existing memory location जहाँ पे कोई content पड़ा हुआ है, right? And the only difference that you see in declaring a reference variable versus an ordinary variable is that reference variable के अंदर आप you add an ampersand sign while you are declaring its type. तो आप इसकी जो type declare करते हैं वहाँ पे आप इसको करते हैं. So what is the जी फातिमा, sir, so basically जो reference variable है, जैसे हम integer कोई भी रखते हैं तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जैसे 8 बिट्स है फॉर एग्जांपल, तो वो 8 बिट्स ले लेता है. तो रेफरेंस वेरिएबल कोई मेमोरी में जगह नहीं लेता है, जस्ट पॉइंट्स, राइट? जी जी जी. आई मीन उसकी ओके, अपनी डिक्लेरेशन जो है, उसकी अपनी डिक्लेरेशन टेक्स सम मेमोरी, क्योंकि दैट्स स्टिल अ अच्छा वेरिएबल. सर, उसकी अपनी डिक्लेरेशन वुड टेक सम एलोकेशन इन मेमोरी, ठीक है. उसको हम कैसे रेफरेंस, एक्सेस कर सकते हैं? हाँ जी, उसको हम अभी बताते हैं कि उसको कैसे करना है आपने. ओके, लेकिन जो उसके अंदर कंटेंट है, जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, उसके लिए वो अलग मेमोरी स्पेस यूज नहीं कर रहा होगा. जैसे V2 ओके, के केस के अंदर वो अलग से एक मेमोरी जनरेट कर देता है और वहां पे वो अपने कंटेंट को कॉपी कर लेता है. तो इट्स अ कॉपिंग ऑपरेशन. दैट मीन्स कि आपने एक चीज उठाई और उसकी एक लेट से कॉपी करके आपने एक और जगह पे रख दी. तो नाउ यू हैव एक्चुअली गॉट 217 content 17 placed at two separate places in memory. जब रेफरेंस वेरिएबल आएगा तो वो 17 की कॉपी नहीं करेगा, ठीक है. वो जो एग्जिस्टिंग 17 जिस जगह पे पड़ा हुआ है सिर्फ उसी को रेफर करेगा. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेफरेंस. सो इट्स जस्ट लाइक एन एरो or a or a thing that actually points to an existing memory location. It doesn't generate a memory location for its contents or for the value it actually stores. Okay. So let me come back to that same example here.
Right. हाँ, आई मीन अहमद, जो आपने बात की है, दैट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ व्हाट यू कैन से अ रेफरेंस वेरिएबल. लेकिन यहाँ से आपको जो है ना, आई थिंक एन इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी कि you can appreciate reason of using a reference variable. Now why are you using a reference variable, by the way? अगर आपके पास लाइन नंबर 20 से भी काम चल जाता है, तो why do you want a reference variable then? ठीक है. जी, so what's the advantage of using a reference variable? So it saves memory. जी, obviously it saves memory. ठीक है, one thing. दूसरी चीज़ ये है कि when we are saying passing by reference and passing by value, for example अगर आप एक function define कर देते हैं, and if you are passing by reference और passing by value, दोनों में फ़र्क क्या होगा? दोनों में फ़र्क ये होगा कि एक केस के अंदर जब फंक्शन में आप वैल्यू कोई पास कर रहे हैं, पासिंग बाय वैल्यू वुड मीन कि लेट्स से कि आपने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो था वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, एंड आई कैन राइट इट डाउन हियर, लेट्स से कि आपने फंक्शन डेफिनेशन, I'll I mean I'll not be following the complete syntax, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह देता हूँ कि ओके, रिटर्न टाइप इसकी मैं फॉर एग्जांपल इफ आई से void, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ int a, सो लेट्स से int a डिफाइन कर देता हूँ, और उसके बाद इसकी मैं कुछ कुछ कोई फंक्शन इसके अंदर लिख देता हूँ, और मेन प्रोग्राम के अंदर आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन. ठीक है, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन and I am passing a variable v1, let's say here. So v1 को मैं pass कर रहा हूँ. So what will happen here is when I am calling this function v1, sorry, function, when I am calling this function, let me call it okay, fun, or when I am calling this function fun here, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. एक int a है which is used in the declaration and in defining the function, और एक वेरिएबल v1 है. Now this is passing by value. So what will happen as a result? v1 and a, they'll be mapped. Okay, and as a result a copying operation will take place. That means the contents of v1 will be copied to a. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो कंटेंट्स आपके पास आएंगे दे विल एक्चुअली बी कॉपीड. सो लाइन नंबर 27 एंड लाइन नंबर 12. लाइन नंबर 27 क्या करेगी? लाइन नंबर 27 ये करेगी कि इट वुड डू अ सिमिलर ऑपरेशन जो कि लाइन नंबर 21 ऑफ द कोड इज एक्चुअली डूइंग. इट वुड जनरेट अ कॉपी ऑफ v1 and assign that to a. This is passing by value. So as a result, अब आपके पास जो contents of v1 है they will be placed at two separate places. एक में a variable है और दूसरे में v1 variable. If I change it to passing by reference, that memory will be saved, जो कि मैं उसकी copy store करने के लिए मैं use कर रहा हूँ. ठीक है, तो a की जो memory है, अगर मैं a को और v1 के contents को a को मैं pass करना चाहता हूँ and I use a reference variable for that, in that case what will happen is कि a copy will not be generated. In fact, जो मैंने पहले भी ऑपरेशन आपको बताया एम% साइन के साथ, a reference variable will be generated. So at present what you are seeing on the screen is passing by reference, passing by value is being displayed. और अगर आप passing by पास बाय रेफरेंस करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है. सो लेट्स जस्ट go over another example here. ठीक है, and same actually goes for let's say if you have
I mean any other type of variable. For example, आप variable type double declare कर दें, तो you can do again the same type of things. ठीक है, the same things would happen. अच्छा, let's now take an example of a function. सर आपकी आई थिंक स्क्रीन स्टक हुई हुई है. जी जी, नहीं अभी मैंने कुछ उसमें चेंज ही नहीं किया. ठीक है, so I'll just take another example. So here is a small piece of code. Let's go over this small piece of code and see कि passing by reference और passing by value में फ़र्क क्या आएगा. So again, line number 9, line number 10, these are simple inclusions that you have done. I've defined a function here twice. So what is this function do? This is simple the declaration of the function, और इसकी definition जो है वो बाद में आती है. तो definition of that function is given here, right at the end. So this is what this function is doing. Return type this function जो है वो void है. The name of the function is twice. यहाँ पे the first argument is of integer type, the second argument is also of an integer type. And what is the operation that is being done here? A को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और B को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. वेरी सिंपल फंक्शन. ठीक है. And another cout command is given here which is primarily giving the address of A. ठीक है. So सिर्फ एक वेरिएबल का हम एड्रेस जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं. So this is what this function is actually doing. ठीक है. Very simple function. ठीक है. Multiplying the arguments by 2, और जस्ट टू सी के पासिंग बाय वैल्यू और पासिंग बाय रेफरेंस में फ़र्क क्या है. यहाँ पे हम ए के एड्रेस को जो है वो डिस्प्ले भी कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग एम्परसेंट साइन हेयर टू डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ ए. ओके, सो दिस इज़ व्हाट दिस फंक्शन इज़ डूइंग. एंड मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? मेन फंक्शन के अंदर वी आर डिफाइनिंग 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है. And then what are these 4 cout lines doing? पहले वाली, the initial values of the variables are being displayed, the first two. The second two lines जो है वो the second line, in fact the third line, which is line number 22, that is actually doing displaying the address of x. ठीक है. फिर आप फंक्शन कॉल है लाइन नंबर 24 में. इट्स ए फंक्शन कॉल, एंड आफ्टर द फंक्शन कॉल हम x और y के कंटेंट्स को और उसके एड्रेस को, x के एड्रेस को दोबारा से डिस्प्ले कर रहे हैं. तो x और y दोनों के एड्रेसेस को डिस्प्ले किया जा सकता है, लेकिन मैं एक को यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जब ये सी आउट लाइन नंबर 18, 19 and 20 will run, contents of x and y will be displayed. x का content 5 है और y का content 5 है. That's perfectly fine. फिर आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं. ठीक है. और उसके बाद आप x और y के contents को दोबारा डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट. और जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल के अंदर what will happen within the function call? वैल्यूज जो है x और y की वैल्यूज को पास कर रहे हैं टू a and b, और a and b की वैल्यूज जो हैं they are being multiplied, which are the same as x and y, they are being multiplied by 2, और उसमें से सिर्फ एक वेरिएबल के एड्रेस को हम डिस्प्ले कर रहे हैं. ठीक है. सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम, व्हाट विल हैपन? आई मीन जो फंक्शन से बाय जो सी आउट कमांड्स हैं 18 to 20 and then 26 to 28, the values of x and y will be displayed. ठीक है. So what do you expect? क्या डिस्प्ले होगा? Sir, I think सेम ही रहेंगे. सेम ही रहेंगे. ठीक है. और राइट, एंड ऑफ कोर्स x का जो मेमोरी एड्रेस जो पहले आ रहा था और x का जो मेमोरी एड्रेस बाद में आ रहा था, उसमें भी कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, बिकॉज नथिंग हैज एक्चुअली चेंज. एंड वील जस्ट कंपेयर दैट मेमोरी एड्रेस विद द मेमोरी एड्रेस ऑफ a.
क्योंकि a is being assigned the value of x. तो अगर x का मेमोरी एड्रेस कोई आ रहा है आपके पास बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन, तो उसका इम्पैक्ट a के मेमोरी एड्रेस के ऊपर क्या होना चाहिए? आई मीन a का मेमोरी एड्रेस क्या वही होगा जो x का मेमोरी एड्रेस है, या वो डिफरेंट होगा? Different होगा. Different होगा. So let's just run this, and this is what you get. The initial value of the variables, ठीक है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 8 है, address of x is given here, then you call the function and within function the address of a is given here, ठीक है, and after the function has been called आपके पास x और y की वैल्यूज जो हैं वो वही हैं और address of x has not changed, ठीक है। इसका मतलब जो असाइनमेंट आपने की थी x को a की, दैट इज एक्चुअली is a copying operation, ठीक है। तो फंक्शन कॉल व्हेन यू आर डूइंग पास बाय वैल्यू, इट एक्चुअली कॉपीज x के कंटेंट्स को कॉपी कर दिया उसने a में और y के कंटेंट्स को कॉपी कर दिया उसने b में, ठीक है जी। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हियर, ठीक है। और अगर इसको मैं पास बाय रेफरेंस करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू राइट द सेम कोड पास बाय रेफरेंस, तो मुझे क्या चेंज करनी पड़ेगी जी इन द कोड? जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एम्परसैंड साइन यूज करने पड़े। जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तब एम्परसेंट साइन यूज करना नहीं, पड़ेगा। जब फंक्शन को जब डिक्लेयर किया वहां पे फंक्शन को जब डिक्लेयर किया तो आई कैन यूज एम्परसेंट, ठीक है जी। शुड दैट बी ओके? आई थिंक शायद नीचे भी जब हमने दोबारा से डिफाइन किया तब जब फंक्शन को आपने डिफाइन किया है तब भी आप एम्परसेंट साइन यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विच इज लाइन नंबर 24, तब आपको एम्परसेंट यूज करने की जरूरत है। सो व्हाट इज, दीज आर द टू चेंजेस दैट यू विल मेक। नंबर 1, लाइन नंबर 12 के अंदर यू विल, व्हेन यू आर declaring and when you are defining, at both these lines, line number 12 or line number 32, you will be using ampersand, ठीक है। so यहाँ पे instead of integer int you will use int ampersand, that would tell the compiler, the system, कि अब आपने x के contents को copy नहीं करना a में, बल्कि a को आपने एक रेफरेंस वेरिएबल के तौर पे देखना है, या जो भी इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा इस फंक्शन का, that should initialize a reference variable. So the argument is x, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया a, तो a will become a reference variable now, ठीक है। and now if I run this code now, okay, so this is what has happened now, ठीक। initial value of x and y 5 and 8, fine, shouldn't be any problem। x का address जो है that is given here, and then you have called the function, और वहां पे a का address जो है you can see is exactly the same as the address of x। क्यों? क्योंकि now आप you are not passing it by value, you are passing it by reference, ठीक है। तो इसका मतलब अलग से a के x के कंटेंट्स को कॉपी करके उसे a नहीं कहा जा रहा, सेम मेमोरी लोकेशन को आप रेफर करें। एंड the interesting thing is that once you have run the code, once you have run the function, the contents of x and y have also changed। आपने so x 10 हो गया और y 16 हो गया। It's not the same। The reason is x and y, if you look at, if you refer to the diagram which I have actually drawn earlier, तो x and a जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को देख रहे हैं।
तो आप अगर x के अंदर कोई आप चेंज करते हैं, अगर आप a के अंदर कोई चेंज करते हैं, इफ a चेंजेस, तो वो उसी मेमोरी, a की मेमोरी लोकेशन को दोनों देख रहे हैं ना, तो a की मेमोरी लोकेशन के अंदर अपडेट हो गया, तो दैट्स वाई x के कंटेंट्स भी अब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट अ कॉपिंग ऑपरेशन। यस, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर हसनैन, कि जब जब आपने a को चेंज किया है, तो अब जब फंक्शन कॉल करने के बाद जब आप x डिस्प्ले कर रहे हैं, तो यू विल गेट 10, आई मीन द चेंज्ड कॉन्टेंट्स, ठीक है जी। जी, ओके बासित, we'll come to that point इंशाल्लाह, जो आपने रेज किया है बासित। लेट मी जस्ट फिनिश दिस, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर है तो जस्ट लेट मी नो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I mean, I'm sure you must have studied this in CS100, but I'm taking some time here to explain this concept so that it's absolutely clear, इसमें कोई issue ना रहे। So passing by reference, pass by reference और pass by value, दोनों में फ़र्क जो है ना, that should be very very clear. And I'll leave an exercise as an exercise for you, कि अगर मैं function call के बाद if I change the contents of x, will that change the contents of a also or not? I mean, you can do that, you can try to find out. मैंने तो यहाँ पे क्या किया कि x को इनिशियलाइज किया है और a भी उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो मैंने फिर a को मैंने चेंज किया और फिर देखा कि x भी चेंज हो गया। तो अब अगर मैं कोड के बाद x को चेंज कर देता हूँ, तो विल दैट चेंज a also? ठीक है, just try to run that and then see. Okay, anyway, so this is a simple introduction to what we have what is pass by value and pass by reference. Why do you need it? Because you don't want to actually occupy a lot of memory by doing the copying operation. Okay, that's one of the advantages of having pass by reference. Okay, and the same concept will be used in pointers. I mean, a very similar concept, and we'll come to that later today. Okay, so if you are okay, then we can move on to the next thing here. I'll stop this sharing and I'll share the slides again. Okay. Right, so let's move on to the slides again. Okay, so I'll upload these slides. You can have a look at these slides and see, okay, and run this code, try change a few things and see that how it actually works. So now let's move on to the concepts that are related to arrays. Okay.